Hello friends, welcome to Technosar. This is Rohit Sharma, and today we are going to talk about the NCL exam pattern and syllabus. Okay, the detailed syllabus description. Okay, so detailed syllabus is not yet updated on the NCL website, but the section B, that is the general section, syllabus is updated. Okay, first of all, a good news to all of you that is that there is no negative marking in this paper. Okay, no negative marking in this paper, so please remember this. Okay, before discussing this, I will like to tell you, those students who are preparing for NCL, NPCIL, ISRO various centers exam, so please quiz tournament is going on right now. Quiz tournament is going on right now in Technovizard app. Please go and download the app and attempt the quizzes daily at 7 PM so that you can prepare well for your exams. Okay, so now we are here to discuss the NCL exam pattern. So around there will be 100 questions, or you can say 100 mark paper will be there. Okay, so part A will be the technical section where 70 mark, the weightage of the technical section is 70 mark, and the weightage of the general section, which include general intelligence, mental ability and aptitude, this will weight up to 30 marks. Okay, so duration of the paper will be 90 minutes, and please remember no negative marking is there in this exam. So total 100 mark का पेपर है आपका इसका, सही है? तो now we are going to discuss the general section syllabus. Okay, so for general section there will be around 30 question, MCQ of 1 mark each. Okay, so this section is common for all post. Okay, this section is common for all post, whether it is mechanical or electronics, electrical. Okay, will carry 30 question belonging to, first is general knowledge about India and its international relations, general science, etc. Okay, so this will form general knowledge. जनरल अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स हो सकता है, डिफेंस, बॉक्स, प्राइजेस, इंडियन डेमोक्रेसी, ये सब कुछ आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा. ठीक है. थर्ड क्या है, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, तो सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, ग्रामर, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आएगा. एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज द वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एक्सेट्रा. तो ये हमारे जो 30 क्वेश्चन होंगे तो इन 4 टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे, दैट इज सेक्शन बी. ओके, और सेक्शन ए का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो अभी अपडेटेड नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि जो हमारे इसरो के अंदर जो इसरो का एग्जाम जो है, जो उसका सिलेबस आपको सबको मालूम ही है, तो उससे रिलेटेड ही हमारे समथिंग कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन, ये सब चीजें होती हैं. लेकिन इसरो के अंदर जैसे माइक्रोवेव के भी कुछ कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, C++ के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सी लैंग्वेज वगैरह के, तो ये जो पार्ट होगा वो NCL के अंदर नहीं होगा, है ना. तो यहाँ पे जो आपके पार्ट होंगे, नेटवर्क होगा, यहाँ पे कंट्रोल का अच्छा पार्ट होगा, कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा आपका यहाँ पे. लेकिन वहाँ पे अगर आप इसरो से कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पे कंट्रोल का जो पार्ट है वो बहुत कम है. सही है. तो ये जो चीजें हैं, जैसी डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर अपडेट होगा वैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा. ठीक है. तो मेन अगर आप बात करें तो क्विज टूर्नामेंट सबसे पहले आपको जो इस टाइम चल रहा है, जो कि फ्री है, आप जाके अटेम्प्ट करो क्विज टूर्नामेंट, और अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे ही हम इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, चाहे हम मैकेनिकल अड्डा ऐप पे करें या टेक्नोविजार्ड ऐप पे करें, तो जैसे ही हम इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे. ओके, सो यू कैन attempt the test series also, okay, to prepare yourself at the best position. Okay, so this much for this video. We will meet in the next video with the next update, okay, about NPCL, ISRO, NCL, etc. Okay, bye, take care.